वही करने लग गया वो। लाइव स्ट्रीम हमारा क्लास लाइव स्ट्रीम। हाँ बट मेरे को दिखता नहीं है कभी। क्या यूट्यूब पे सेट किया ये क्या क्रैंकी रेस्क्यूड बैड बट क्या माइकल जैक्सन डेड एट 50 बूमरैंग जिम गूनर तो मतलब ना हर जगह हम जो शॉर्ट बेचते हैं बिग नट्स बाय थंडर सब क्या है तो इंस्टा पे है वापस से एक ही बार मैंने अभी भी अनपैक नहीं हुआ है वीडियो देखा इसको अनपैक तेरे पास सुपर VPN क्यों है एक्स्ट्रा करिकुलर नोटिस में क्या आता है आ गए अपने क्लास में क्या है कौन सा ब्रेक है ये बेटा हो गया ना 5 मिनट्स हो गया के साथ में कैसे व्हाट हैपेंड नहीं चलो जो अपने प्लेस चेंज करो डोंट सिट टुगेदर हां मैंने क्लास सेक्शन में बात नहीं किया था सर हम उसका हम उससे बात किया तो बेटर one student can come and sit here हां मैं one student ये वन स्पीकर तो सुन गई you know she is having test in her so many around that so what's the test तो ये कौन दो सब्सक्राइबर बस जो कैसा yes no issue so last time we have completed atmospheric and practical question atmospheric and this one no pollution and atmospheric pressure वाला तो फर्स्ट में pressure pollution whatever ma'am no it is not pressure and pollution both are different my dear ठीक है मैम हाँ एक चैप्टर तो फर्स्ट टर्म से आ रहा है और 3 चैप्टर अभी तक 4 this we will complete today next Monday on 17th we will start with कोई नहीं आज 17 में कोई नहीं है up to you that class will extend till December अरे मैम क्लास और कैंसिल दिसंबर की छुट्टी है ना चलो चलो मुझे नहीं पता चलो मेरे को नेक्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट करना है now the next one we have completed gas equation page number 131 बस आप क्या बोले नहीं okay always you are doing gas equation हां हमेशा यही रहता है मैम मैं हमेशा बुक लाती हूं और आप अच्छे से लिखते भी हो yeah actually you are writing calibrate बना बना आज मैंने दूसरे को दिया था the next and the very easy part after Boyle's and Charles law हो गया था समझ में आया था ना क्या है स्टेटमेंट फॉर बॉयल्स लॉ ऐसे देख के नहीं ऐसे विदाउट लुकिंग हाँ फास्ट विदाउट लुकिंग बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ हाँ कौन इनवर्सली proportional to pressure at constant temperature which law Boyle's law Charles law good temperature very good क्या ऑप्शन नहीं है ना ओके ना ठीक है सेम थिंग इज देयर फॉर क्लास 10 ना पेज नंबर it is 131 okay then this one combined gas law what we have to do in combined gas law simple by combining both the laws together which side we are combining right left
two sides are there na, volume proportional to inversely proportional to temperature, volume directly proportional to temperature. Okay, so on one side, every time for both the laws you have volume. On right side, one time it is T, 1 by T, another time it is 1 by P and 1 by only T, right now? So that you will combine, finally you will get P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. It is in that format only na. देखो कुछ गड़बड़ नहीं है ना, combined gas law. Sure. Okay, so this is a combined gas law. Then again in Charles law, one more statement we have seen. What is that statement? With slight increase or decrease in the temperature with 1 degree increase or decrease in the temperature, there is increase or decrease in the volume by 1 upon 273 of its original volume. चलो इतना तो याद रह जाएगा, बुक में एक बार देखो. Okay, because equation they are little bit tricky. Then the next part is a standard temperature and pressure, STP. Now standard temperature and pressure you need for this year as well as for next year. This year remember it and next year you have to apply. Every time for doing anything we are always selecting the standard things. भाई standard वाला चाहिए, अच्छा वाला चाहिए, इसका ये quality चाहिए, कपड़ा लेना है durable चाहिए, fashionable चाहिए, थोड़ा expensive भी चाहिए. So these are our parameters. We are always working on the standard parameters. Same like that in case of gas, standard parameters are applicable for temperature and pressure. Temperature and pressure. So what are the special parameters when we say it is at standard temperature or pressure? Vedika, standard temperature and pressure. क्या values क्या है for temperature? हाँ देखा, ऐसा ऐसा करके देखो कितना temperature दिखा रहा है. Okay, कितना pressure दिखा रहा है, देखा? It is on page number 131. Standard temperature. Everyone open your the text. Volume page number 131. So when we can call that particular gas at that standard temperature, टिक मारना है या तो नोटबुक में लिखना है, सो के मत रहना. 0 degree Celsius of 23 Kelvin for temperature. Either you go with a 0 degree or in Kelvin scale and in Celsius scale. We know what is the difference. 273 Kelvin, which corresponds to 1 atmosphere or 760 mm for mercury. It is 760 Hg of mercury. 0 degree or 273 Kelvin corresponds to how much atmospheric pressure? 1. Okay, if you have gas at 0 degrees Celsius or 273 Kelvin, okay, so the pressure it is 1 atmosphere or 760 mm of Hg. Mercury से compare करना है. Then standard normal temperature, it may be either 0 degree or 273 and standard pressure 760 mm, same thing it is given below. Okay, so when we are saying standard temperature मतलब what are the values for the standard temperature? Values बताओ. 0 degree Celsius or 273 Kelvin and pressure 1 atmospheric pressure or 760 mm of Hg. Hg I think it is not given in our book. नहीं दिया है ना? हाँ दिया, नीचे दिया, ऊपर नहीं दिया. हाँ, तो ये आप लोग याद रखना. Then next one, effect of moisture on pressure. अभी ये वाला चीज it is very effective. ये काम कैसे करेगा? Effect of moisture on pressure. Moisture means that gas it is contaminated with water. बराबर, it is contaminated with water. For example, if you are making any gas, ये standard values याद रखना, अपने volume में टिक मारो. आपको 10th standard में you have to apply this value for solving examples. Now, for example, if we are preparing any gas here, ये मेरा round bottom flask है.
By the means of delivery tube, this gas, it is collected in one of the container. You can take beaker, जो भी कुछ है उसमें वो हमने gas collect कर. Okay, it is only gas. Here we have reacting mixture and here we are collecting gas. It may be HCl, it may be this one nitrogen gas, कोई beaker gas. Okay, HCl it is collected by upward movement of air. तो मैं आपको यहाँ पे HCl ही दे देती हूँ. आपको next year में भी काम आ जाएगा. Air it is passed away and HCl is here. ये हो गया. मैंने नहीं ये लास्ट टाइम आपने ही बनाया था ना फर्नर वही फर्नर. अच्छा है ना. थैंक यू. My drawing is very good anyways. You will remember this. So in this reaction mixture we are making HCl gas. HCl gas it is collected in the jar. Now HCl gas it is heavier. मैं आपको 10 standard वाला example बता रही हूँ. This is heavier than air. So whatever air which is present in this jar, it will HCl will display that air. And this displacement it is downward movement for HCl and upward movement for air. इतना याद करना. अब मैंने ये this container it is empty. Empty container में खाली air ही है ना. और कुछ मैंने कुछ डाला नहीं उसमें. उसका moisture निकालने के लिए I have not added anything. Okay. Now if I close this container, then whatever gas vapors are there, they will create only the pressure, and this pressure which is created, it is created only by that vapors of HCl gas. उसके अलावा मेरे पास में water है यहाँ पे, मेरे पास में air है, I don't have anything. तो जो pressure create होगा, that pressure it is created only and only by HCl. बराबर. Instead of this arrangement, if I do in this way, this is my container, it contain water, then whatever gas it is there, it is passed slowly in this way. यहाँ से आके धीरे धीरे यहाँ पे चला जाएगा. इसमें एंटर करें. HCl it is soluble. Okay. Now again, the gas which is collected here, it will create some pressure. Some vapors are formed. Do you think these vapors are dry vapors or dry gas, or it is contaminated HCl? It is highly soluble. समझ आपके concept समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा नहीं आ रहा है. अच्छा एक मिनट, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको हटा देती हूँ. आपको 10th में नहीं लेके जाके आपको मैं घर के रसोई में फिर से लेके जाऊँ. नहीं ये है एक्सपेरिमेंट. You have this experiment. Yeah. Take normal beaker. It is with water. This beaker is open beaker. Okay. This water, if it is kept in open, slowly, ये sun हमारा, it will vaporize. This vapors contain only water molecules. इसमें सिर्फ पानी है हमारे पास में और कुछ नहीं. पक्का. Second beaker we have, it is contaminated with for example copper sulfate. So this is our blue color solution. This solution again it is made in water. These molecules are evaporating, but in which case there will be more evaporation? This one or this one? कहाँ पे ज्यादा होगा? Water में क्यों? Water it is only solvent. Here you have solution. Solution is a mixture of solvent and solvent. So your both components are here. Here we are having only one type of component. Difference है ना. आपने बताया ना यहाँ पे evaporation ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, because the topmost layer it contain both the component. Here it contain only the one component. Okay. ये हमारा actual process है. अभी मैंने क्या किया? I am passing gas by the means of water. So automatically whatever gas is there, it will be contaminated with water.
Okay, that pressure or the vapors which are present, it contain gas as well as water molecules. दोनों चीजें साथ में रहेगी. ये जो प्रेशर क्रिएट करेंगे, now initially it was only gas. Now we have gas as well as water. So whatever pressure it is created, that pressure it is known as surface pressure. वो आपके वहां पे दिया हुआ है, देखो पिक्चर जो दिया हुआ है, एक्वियस टेंशन ऐसे करके, एक्वियस टेंशन दिखा आपको. हाँ देखो क्या है, देयर इज अ वन डिलीवरी ट्यूब. पिक्चर देखो, on same page there is one delivery tube, then in between there is one cylinder type apparatus. Gas is collected, it is gas plus water, gas plus water, upper wala part, gas plus water, and down there is atmospheric pressure on that the water which is present in the beaker. Okay, now if you compare inside that cylinder, inverted cylinder, there is more pressure, and that more pressure it is created by gas as well as vapor. So that particular thing, that particular process or that pressure, it is known as aqueous tension. उधर भी टेंशन है. हाँ, और this tension is created by aqueous, and when we say aqueous, we have done that thing. Aqueous means what? In water. बराबर है ना? So whichever gas we have, that gas we are dissolving in water, and so when you are collecting that gas, it will be contaminated with water, and that pressure is created by vapors. That pressure it is known as aqueous tension. अगर आपको difference निकालना है, if you want to find out the value for aqueous tension, by using this equation you can find out. So for this, first you have to find out the pressure created by only gas, and then pressure created by vapor plus gas. So you can calculate the difference, what is the aqueous tension for that particular solution. It is given total P total is equal to P gas plus P water vapor. P gas is equal to P total minus P water vapor. So in this way you can find out your answer. हाँ बोलो. ये जो वाटर पेपर है इसमें क्या बॉइल हो रहा है एक नॉर्मल है. नॉर्मल बॉइलिंग वाला, बॉइलिंग वाला होता है ना, तो बॉइलिंग का हीटिंग का अरेंजमेंट. There is no as such arrangement is shown. So whatever gas it is prepared ना, it is passed to उतना ही करना है, just pass करना है water में से. So whatever pressure is created, that pressure it is your aqueous tension. उधर भी टेंशन चढ़ रहा है. बोलो. देखो तुम्हारा तो दोनों बात नहीं कर रहे थे. Again you have started with some activities. I don't know. चलो. Now which part is remaining? I don't know. But you are busy with some activity. So aqueous tension we have done. We have completed standard pressure, temperature, gas law हो गया. I think we have solved few problems also. Yes. Okay, shall we start with a new topic? Yes, ma'am. हाँ, pollution वाला. Pollution नहीं, but as per my schedule I have to complete with pollution. Okay, wait. तुम्हारा example हो गया, सब कुछ हो गया ना. Exam हो गया, exam नहीं हो गया. Okay. So this topic it is completed, you are saying. No issue. We will revise it again. So whatever you know na about atmospheric this one pollution, let me know. चलेगा, no issue. So for this period we will take next. Few more we will take examples. Few more we will take ना. Next period we will start with pollution. So एक दो वीडियो देखोगे फिर थोड़ा एक्सप्लेन करो. Very difficult ना. आप अभी ध्यान सॉल्व कर Problem solve. Take on exam. ऐसे हो जाओ. ऐसे हो जाओ. नहीं किसी ने मत देखो, तो फिर करना तो नोट दिखाओ ना. नोट ना. Take your maths notebook. Don't give me the n number of excuses. Take your notebook out. नहीं वो खत्म नहीं होते ना, n number of excuses. कहाँ पे? Page number 141. 141.
मैंने भी देखा ये वाला आंसर सही है चलो So let's start. Take the first one. You all are having volume with you. यहाँ पे तो तीनों के पास है, आपके पास नहीं है. A fixed volume of gas occupies 760 cm cube at 27 degrees Celsius and I'm कैसे repeat it is problem number 1. A fixed volume of gas occupies 141 760 cm cube at 27 degrees Celsius and 60 cm of HT, 60, 70. 70 cm of HT. What will be its volume at STP? करके बैठे हो? हम तो दो कंटिन्यू करेंगे हाँ. कब अंदाज होगे? Fixed volume of gas occupies 760 cm cube. The 760 is what? It is volume at 27 degrees Celsius temperature and 70 cm of Hg is pressure. What will be its volume at STP? किसी करना है इसको बताओ मुझे. Help me. What's ना? उसने वॉल्यूम पूछा है STP. So at STP temperature is 70. Temperature is either 0 or 270. Temperature की what will be its volume? हाँ. Pressure is 1 atmosphere. We have to calculate volume. Idea. So इधर देखो. नो बड़ी कॉल करते हो और एनर्जी वेस्ट करते बैठो. ये तुम्हारे साथ एनर्जी वेस्ट करते हैं. बात कर Okay, can we use this equation combined gas term? Yes, V1 upon T1 is equal to P2 upon T2. Because we know what are the standard values for pressure, temperature, volume. P1 gas combined वाला, combined gas P1 upon T1 is equal to P2 upon T. First write down the given things. एक बात करो. हमारे पास में क्वेश्चन पूरा था. बात नहीं कौन estimate timing and के पास की वर्क करो. Diagram equation P1 upon T1 is equal to P2 upon T. P1 temperature is here. P1 standard बोला कितना? What temperature it is given? 27 degrees Celsius. Or 760 See, it is pressure. 760 is volume, 27 is temperature, and 70 is what? 70 volume. Sorry, 70 is pressure. Pressure. आपको क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम. P1 760. P1 is 760. P2 क्या है? P2 प्रेशर ना, स्टैंडर्ड प्रेशर भी है.
ऐसे क्या कर पहले लिखो आप P1 is what P1 is 760 70 then this one P1 is 27 degrees Celsius and pressure is 70 centimeter of H. प्रेशर को 70 सेंटीमीटर से 180 उसके बाद में हमको करना क्या है टेम्परेचर T2 0 degree Celsius 0 degree Celsius then pressure 760 mm of Hg और इक्वेशन को रीअरेंज करो फिर बी के लिए मैंने प्रेशर को 180 180 80 स्टैंडर्ड वन मैंने यहाँ पे 70 सेंटीमीटर किया उसको 180 आंसर लिखा है ना मैंने 760 पीछे ये कि दिया था जब आप एसटी भी बढ़ा रखे हो 70 सेंटीमीटर का पैकेज सही है ना P2 तू जा उसको चिपका के एकदम उसको लेके जाके क्यूजर पैटर्न both of you go and sit in 43 number that is the best class for you small size there will not be any problem P2 V2 और P2 क्या कैसा P2 V2 और P2 क्या देखो एक पैरामीटर चेंज कर रहे तो हम दूसरा पैरामीटर भी चेंज कर रहे हैं इसने हमको स्टैंडर्ड बोला है तो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन व्हाट इज द वैल्यू फॉर T and P whether you are taking in Celsius or Kelvin that also you have to decide हाँ तो वो केल्विन के लिए सर हाँ तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है कि given सेल्सियस की प्रेशर सेल्सियस में ले लो और प्रेशर का प्रेशर इज 76 वन 1 एटमॉस्फेयर और 76 हाँ तो कैंसिल आउट होना चाहिए P2 का क्या होगा P2 तो फाइंड आउट करना है बेटा क्या है हम P2 हाँ बहुत सीधा है तो क्या है प्रॉब्लम अरे लेकिन मैम अपन 0 आ रहे हैं बहुत जीरो नहीं आए ये हाउ इट इज अपॉन जीरो आंसर P2 ऑलरेडी है P2 नहीं है 0 से हाँ पे जीरो 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 और 273 Kelvin. Even this Celsius you can convert in Kelvin scale ना. हम मैं हो जाएगा समझ खाली दो होते ही रहो. Volume 760 cm3. Then temperature is given in 27 degrees Celsius. This you can convert in Kelvin scale. And pressure it is 70 cm of Hg. Yeah, the P1 data hai. So P1 this one. Your equation is P1 V1 upon T1. It is equal to P2 V2 upon T2. You have to calculate this. Now, if you are taking this 27 directly, you are getting denominator in 0. So you can convert it into Celsius Kelvin scale. हाँ तो Kelvin में convert करो इसको. हाँ कितना आ रहा है? Degree Celsius it is plus 273. हाँ कुछ भी कर बेटा. हाँ do whatever you want. एकदम भारी वाला काम है. नहीं माइनस करना. उससे गलती से बोला है उसको माइनस करना. See here it is equal on page number 132. Pressure, volume, temperature 76 cm Hg means 760 mm. बेटा देखो दाएं फर्स्ट बेंच on page number 132 वेदिका page number 132 open करो गड़बड़ करके बैठेगी 76 cm Hg is equal to 760 mm. In our problem it is given 76 cm
which is corresponding to 760 mm. So that you can convert again 1 liter volume, 1 dm cube, 1000 cm cube, then 1 cm cube, 1 meter. Degree scale, here Kelvin can get Kelvin by adding 273 into your Celsius scale. So again here you will get 273 plus 273 आता है ना 27 plus 273 कितना हो जाएगा वो? Kelvin फॉरवर्ड करो फटाफट करो चलो टाइम पास करते हैं 300 होता है ओके चलो अभी अनसॉल्व प्रॉब्लम है क्या छाते हैं बैठ के unsolved problem बोलिए आंसर इज डी कितना आ रहा है हाँ करो गाइस आप क्या कर रहे हो मैम आंसर क्या है आंसर दिया है ना मेरे बुक में आंसर इज डी हमको आंसर क्या आ रहा है ना मैंने कभी तो आंसर स्टोर भी दे सकते हाँ कभी करती है नॉट आंसर्स 7 and 9 चल गया आंसर 67 हाँ सही है 637 सेंटीमीटर हाँ क्यूब कैसे आ गया तो प्रॉपर कैसे क्या चला इस बार ना उसमें छापने लिखे what changes you have made only Kelvin wala scale and pressure wala scale remaining everything is the same so we have used combined gas equation yes and तो आंसर आ रहा है हाँ rearrange proper किया है ना so for after rearranging the equation we are getting is and the direct value is 70 760 final scale please sorry please sorry यहाँ पे आगे बोलना तेरा हो गया मैम यहाँ पे नीचे कितना आ रहा है यहाँ पे डेसिमल में आ रहा है चलेगा very good decimal point ठीक है तो the 6.37 same yes it is 637 cm cube डेसिमल में आ रहा है हाँ एक बार बोर्ड सॉल्व कर हाँ तुम ही बोर्ड पे सॉल्व करो उसके हाँ अंडरस्टूड ना टेक योर बुक एंड गो देयर टेक योर बुक एंड गो देयर वांट दिस यहाँ तक मैंने किया है हाँ rearrange that equation for V2 substitute those values and do it properly बराबर है मैम डायरेक्ट कर और डायरेक्ट मत करो rearrange that equation उससे ले rearrange that हाँ हाँ you have solved कौन है वो मैं करूँ अच्छा this equation you are using now first rearrange this equation for V2 and then substitute values with unit number topic निकाल even match जरा चेक करो what she is doing this 70 the getting answer without decimal point rearrangement is as per rearrangement sure क्या लिखा है बस क्या है
पहले तो उस पे ही फेसबुक पे पहले समझ ले then compare it with what this one values. Why you have taken 2 times 760? 760 दो बार हाँ कहाँ पे हाँ एक्सप्लेन करो अरे तेरे बुक में लिखा है हाँ ठीक है P1 is given value P1 again it is given so 1 to what here see 76 cm edge correspond to 760 mm तो वो आपको बताना है okay then 273 is what your initial temperature degree Celsius 300 टेम्परेचर केल्विन में 300 आएगा हाँ 300 आएगा और 273 is a standard value हाँ right now you are ready for this one करो आगे करो 760 get cancelled आगे next step हो गया same answer you are getting Anas equation देखो arrange करके क्या 637 हाँ 637 1.3 है कैसे नहीं इसमें point है you got solid wherever you will do mistake now we are here to correct don't worry 70 मेरा नाम है 637 कर दिया आनंद go into correction केलम going to correction क्या नाम क्या है केलम CALTB Isuja you understand वो लोग आदत है ऐसा बोलते बैठने हाँ कंफ्यूज करेंगे वो लोग बताएगा ये ये this is 300 और 306 अरे वाह समझना चाहिए ना हाँ अरे वेट ना ना क्या अनिका अच्छा हमको बताओ 7 ब्लॉक पे है 70 सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर्स में कन्वर्ट अच्छा 70 सेंटीमीटर को आपने मिलीमीटर में कन्वर्ट किया सेंटीमीटर ऑफ एच यू हैव कन्वर्टेड इनटू मिलीमीटर्स सॉल्व करना होगा आपको समझ में आया दिस टाइप का अंडरस्टूड centimeter scale has converted into meter scale. We are going with this one 70 centimeter is equal to 70 feet. नहीं पॉइंट का आंसर यहाँ पे 637 cm क्यूब दिया है आपने कहा यूनिट लिखा है इट इज नॉट द यूनिट यूनिट लिखना है बेटा प्रॉब्लम हाँ एवरी टाइम विदाउट फॉरगेटिंग राइट डाउन यूनिट्स हियर और द हैंडराइटिंग से वेरी गुड I thought only my handwriting is good. Okay. Or still we have stars here. Okay. So here only the combined gas equation is used. Every time you have to go back to that table. So better to learn that table. If it is given in degree Celsius, you start you can convert it into Kelvin. जैसे आनंद one more example. Which one? एग्जांपल है क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन सेकंड वाला हाँ लाइन से चलते हैं राइट से ही चालू करते हैं ओके सेकंड एग्जांपल का स्टार्ट विद सेकंड वन मैं डिस्टेक नहीं कर रही हूं आपके पास जो बुक है ना स्टार्ट विद कोई जरूरत नहीं अदरवाइज यू हैव टू कम एंड सॉल्व इट हां ये सेकंड वन रीड दैट प्रॉब्लम केयरफुली या at 0 degree Celsius and 760 mm of Hg pressure. Okay. A gas occupies volume of 100 cm cube. This temperature, pressure, and volumes are given. The Kelvin temperature of the gas is increased by 1/5
1/5 while the pressure is increased 1.5 times. Calculate the final volume of the gas. पहले ये बताओ इसमें इक्वेशन कौन सा यूज करोगे? सेम और डिफरेंट? Same. P1 V1 T1 अच्छे से पढ़ लो। मैंने अच्छे से एक बार पढ़ लिया। Read it properly. अच्छा Zero. Wait, add अच्छे से पढ़ लिखाते हैं। At 0 degrees Celsius and temperature is given 760 mm of Hg pressure. A gas occupied volume of 100 cm3. First three parameters are given. P1, V1, T1. These parameters are clearly given. The Kelvin temperature of a gas is increased by 1/5. तो उसको कैलकुलेट में करना पड़ेगा। पहले अच्छे से सुनो ना। फिर आपने क्या क्या पॉइंट्स है वो बताते हैं ना। So temperature for T2 value we have to increase it by 1/5. While pressure increase 1.5. 1.5 is 1.5. Calculate the final volume of the gas. Again, you have to calculate V by using the same equation. जल्दी यार हाँ गाइड हेल्प So ma'am, उन्होंने कैलकुलेशन में बता कि T1 डिक्रीज हो रहा है तो जो T1 है उसमें इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो T1 को कन्वर्ट करना पड़ेगा कि कोई सिंपल I don't think it is important to convert yourself. Right, तो 0 डिग्री दिया है ना हाँ 0 degree standard term is not mentioned here. कर सकता है तो ट्राई तो करो 0 डिग्री का हम 1/5 करना है केल्विन में करना पड़ेगा बिकॉज 0 का अगर आप 1/5 कर रहे हो तो 0.5 हो जाएगा so you need to convert it into Kelvin scale. Girls, you are not solving. क्या कहोगे चालू करो ना कन्वर्ट करो ना टेम्परेचर स्केल क्या है P2 क्या है अरे मैं बहुत मैथ्स P2 it is increased by 1.5 times. तो इसका 1.5 times कितना होता है 76 का चलो हाँ हाफ कितना होता है 1.5 कितना होता है There are still such problems. ऐसा कुछ And when there are still such problems in exam. Yes. मोस्टली मैक्सिमम से दो marks. मार्क्स के लिए सिर्फ दो क्वेश्चन जो मांगा है 4 मार्क्स से याद है 2 प्रश्न 4 मार्क्स But your question paper pattern is similar to 10th standard question paper pattern. मार्क्स सब सेम ही है All questions are compulsory. सेक्शन बी में मैं 4 चूज करना चलो 5 ये यहाँ पे सेल्सियस में दिया है सेकंड वाला ये डूइंग सेकंड वन here it is given in celsius if we are increasing by 1/5 1/5 is 0 आ जाएगा डिग्री मतलब क्या convert this to Celsius Kelvin का 1/2 कंप्लीशन है 4.8 आंसर और ये 1 बता रहा है अच्छा मेरे को फाइनल आंसर बताओ दिस नाउ शॉर्ट एग्जांपल आंसर इज 80 cc CC. cc क्या cubic centimeter what do you check out क्या आपने स्टार्टेड क्या कर रहे हैं हो गया आपको हाँ चलो आनंद करो सॉल्व करो
ये बेटा थोड़ा अच्छा हैंडराइटिंग लिखना प्लीज। मेरा हैंडराइटिंग सबसे अच्छा तुझे पता है ना। ट्राई टू राइट, थोड़ा ट्राई करो। अनामिका इज स्पीकिंग। अनिका अनामिका should always अनामिका 0 degree Celsius. even students उनको जितना बोलना है ना, वन साइड स्टार्ट की था पॉल्यूशन टॉपिक ना, वन बाय वन आके बोलो। हम बेटे सुनोगे क्या क्या बोलते हो पॉल्यूशन। पोल्यूशन ना हमारे वातावरण को सूचित करता है। ये लिख देना बेटा, वातावरण को दूषित करता है, ये से हो वो पानी को भी निर्जल बना देता है। सॉलिड, बस सॉलिड सा। आंसर आ रहा है, यू आर गेटिंग वेदिका। But नहीं होगा, C1 होगा. B1 we have to calculate B2. B1 is given. आंसर आगे मैंने इसको तुमने को अलग बैठने दिया। आंसर इज 80cc। आंसर इज 80। आ रहा था, किसका आ रहा है? वेदिका का। वेदिका का है, तुम्हारा नहीं आ रहा है ना? वेदिका नहीं, वेदिका है। वो जो भी कोई रहने का है ना नासा, वेदिका है के वेदिका है। हाँ अनामिका बुलाते हो। इसका नाम क्या है ना? इस मुस्लिम परी का नाम क्या? देवो नहीं देवी। हाँ सर एक Okay, let's write down. ठीक से करो हाँ, ये सब निकाल दो। सन वाटर सब हटा दे। चलेगा सर। और बिल्कुल नहीं ये पूरा है। यहाँ बिल्कुल नहीं देना। अच्छे से लिखो वेदिका। Use complete space हाँ। Then you have solved. Push substitution correct list. No nothing. क्या क्या देखा आनंद, आनंद का भी गाड़ी रुका है, कहाँ तक किया है? इसका पेट्रोल या Oh, wait fast. 273 unit Vedika Kelvin. And for substitution, do it with units. इसका मेरा क्या है? 127. माइनस क्या है? 54. तो डायरेक्टली लिख दिया करो इसका और T2 का वो। अच्छा अच्छा, तो वो वैसे तो बता दो। और हाँ वो क्या 273 by 5 Whatever conversion you are doing now, please write it. एक मिनट क्वेश्चन देख सकते हो। हाँ फोटो इसका फोटो देखो। प्रॉब्लम क्वेश्चन क्वेश्चन इसका फोटो किसके पास? 1.5 है मेरा मैम। एक चीज बोलो 1.5 का प्रेशर 1.5 इंक्रीज है, बट मैंने उसको इंक्रीज नहीं किया, डायरेक्टली कर दिया। दैट्स लाइक 80 भी आ रहा है उसका। सेम आंसर वो 1.5 टाइम्स तेरा P2 क्या है? P2 क्या है? 760. अच्छा 1.5. क्यों 1.5?
ये ऐसे ही कर रहा है बच्चा। अब मैंने देखो अब ये हंसना अब ये हमेशा करता है बोला अब इसका अब ये हमेशा करता है मेरे को बस This process क्यों आ गई? Time process. नहीं माँ Very good. Okay, fine. Now you start solving. Now you have taken 1.5 increase of the volume pressure. Pressure. 1.5 लेके calculation है. अब क्या कर रहे हो? मैंने तो अपना क्यों? Next year it will become very difficult for you. जो आपको भी बंद करेगा और बात भी बंद कर रहे. प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे? हाँ वो ना द्रौपदी मुर्मू मेरे को आंसर पेन किया है एक मिनट सब्स्टिट्यूशन चेक कर लो पहले. Then go for reduction. Whatever cancellation you are doing ना, do it neatly, हाँ? उसमें ही सब एक के अंदर एक मत करना. Otherwise write down one more step after cancellation. Yes. हमारा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अच्छा हो जाएगा. मेरे को पेन किया है लगा दिया अच्छा एक मिनट बैठ जाए. T1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon formula. Same formula we are using. Then we have rearranged that equation for V2. Okay, wait everything. V2, so equation becomes P1 V1 into T2 upon T1 into P2. P1 760 it is V1. Then V1 it is 100. It is given value, right? Yes. Then T2 1/5 right now. Temperature. So whatever scale we have 0 degrees Celsius that you have converted into Kelvin. Kelvin and Kelvin का 273 का 1/5 is 54.6. Then T1 again 273 into P2 is 760. Because conversion here. Conversion here. Then 70, 60, 760 cancel. Then इसका decimal लीजिए 54.6 था इसका decimal आ गया 10 और 100 कटा और 273 उसको 3 से okay, answer is same. yes हाँ लेकिन इसको तो 20 आ Same values. how come उधर 760 multiply क्या 760 into 100 volume. Then क्या लिखा है 760 के बाद पीछे 100. After 760. वो 10 देखिए 10 और 100. 10 नहीं है 7 से 10 सॉरी 10 को कहाँ से आया? 5.6 सॉरी 54.6 का नीचे कर दिया अच्छा उधर से डेसिमल हाँ, हटा दिया। डेसिमल पॉइंट एंड टू इन डिनोमिनेटर. ओके देन तो काटा आनंद क्या कुछ पहले पॉइंट है और इनके साथ लाइट मोड व्हाट अबाउट यू काट रहा हूँ काट मामा ब्लाइट लुक एट दैट डोंट कट इट साइड एरोप्लेन मोड में आपका कौन सा मोड है टेबल मोड इट इज वाइब्रेट मोड है हो गया क्या किया Very good. That's great. सेम वैसे ही है सिर्फ कॉपी करके क्या श्योर अब बताओ आप बता सकते आपका आया आंसर 80 इसका हम फिर 2 आ रहा है ताकि वहां पे सॉल्व करो यू डिवाइड इट वो हड़ी से नहीं नॉट बाय दैट स्मार्ट वर्जन टू इट कैरी आउट द डिवीजन understand
You start. वैसे ही है कि उसी टाइप का तो मत करना क्योंकि अभी दोस्त वॉल्यूम वाले वो कर लिया दूसरा कौन सा वाला टेम्परेचर नीचे दिया है नीचे लास्ट है यहाँ पे वॉल्यूम भी है स्विच बनना पड़ता है थर्ड वाला वॉल्यूम का है अगेन बता दो एक सेकंड यहाँ पे 6 वाला प्रेशर कर 6 वाला प्रेशर कर It is coming 20. But your answer is 80. बटर कलेक्टर में सारे Temperature को you made 150. Temperature it is but then how you are getting 80 answer? Either your answer is wrong or the given answer is wrong. Given answer. मेरा wrong है. Even he is getting the same answer. मैम मेरे को 20 आ रहा है. Two things are wrong. It means how you try to do it. Beta, if they are getting 20 answer, आपके पास वो 80 है. 80 नहीं क्या हो हाँ इधर पे. तब चला मैं तो कब से बोल रही थी क्या हुआ answer they are saying. एक बार इसमें जाओ मैं बाथरूम कोई नहीं करता. वो chat GPT में फोटो अपलोड. 300 आपके पास क्या है डबल टॉप का स्पीड और ये नहीं क्या स्पीड नहीं Actually, yesterday I took it for charging, but when I was a stand pin. तो अभी तक तो ठीक चल रहा था. स्पीड नहीं कहीं आपको जाना है मोबाइल निकाला है वहाँ पे देन कर बेटा कैलकुलेशन कर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्लीज एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए वेरिएबल्स चलो नेक्स्ट ले लो. आपका निकनेम है वो काफी. हमारे प्यारे से क्लास में रखा था निकनेम फैमिली. इसको ये बोलता और बता रहे हो आंसर वेदर इट 80 और 20 अभी वॉच का यूज है डिवाइड करो न्यूमरेटर दे दो उसको क्या करें वैल्यूज आ रही है ना. हां सब लास्ट दिन है तो ये स्टार्ट करो बस आज के से पता नहीं है सर हम इसके के बारे में सोचा बैठे. सच में सेम टाइम नॉट गेटिंग इट न्यूमरेटर
अच्छा, this total on on reduction it is giving 20. Final answer B2 is 20. यही आपको बोलना है ना? 20 पे राइट है, B2 is 20 तभी नहीं रहे वो। है ना? मैं बोलता हूँ क्या गूगल से कर ले। 26 ये तो बड़ी डेंजर वाली कंडीशन हो गई। अरे मैं आपको क्या हो गई आप मेरा थे ना हाँ? फ्रेंड्स रहते हैं आपको अभी वाली मैम कौन से टेंस करते कैंसर जाती हो तो और इशू हो जाएगा, ये इशू गूगल से मत कर। अभी चार्जिंग वाला पॉइंट है तो देखियो, अदरवाइज हाँ हम 10 मिनट का ब्रेक लेते नहीं है। और सेकंड मिस्टेक करें तेरे पास एक तेरा कुछ नहीं है छोटा वो तेरे पास एक कुछ कोई पार्टिसिपेट कर बंदा you got it out for it I will देखा तेरे पॉकेट देखा एक पॉकेट छोटा पॉकेट है और करना है भाई तो ये एक बड़ी पॉकेट ला नहीं साथ में चल आज का पॉकेट को देंगे साथ में एक से नौ यहाँ से अरे भाई ये क्या सोच के आया है ये उस बेंच अरे वो ना पैसे की सामान तेरे फोन में जियो क्यों है बदल मैं दिखाता हूँ तुझे आप दिखाया जियो क्यों है वहाँ पे 6 मैं मिटा दूंगा इसको पूरा मिटा दे और 6-7 कितने बड़े हाँ पूरे बोर्ड पे 6 7 नहीं दिख रहा भाई तो ना कितना तो छोटा है देख इतना बजती है यार तो चुप ही से रहता इतने रंग ब्लैक स्टोन है बस दिख रहे हैं अरे मैं सेम ही ऑलमोस्ट ओके माइकल जैक्सन का माइकल जैक्सन का मूवी रिलीज होगा माइकल जैक्सन को कंसीडर करना है First expanded. Yeah.